Good morning, all of you. Chapter 1, some basic concepts of chemistry, in which we are going to start today the new topic, that is the properties. Suppose if you have any material, okay, and you wanted to measure it, okay, we have any material and we wanted to measure it, okay, उसको हमें measure करना है. So in that case, we need to measure in two different aspects. Okay, there are two different aspects. Okay, one, that is you can measure it based on the physical properties. Okay, we can measure in physical properties by seeing its physical properties. Okay, unka appearance kaisa hai. Okay, then the color is there. Okay, their melting point is there, their boiling point is there. Okay, if you measure all these things, okay, then it is considered to be the physical properties. We are going to measure the physical properties. Okay, just a minute. Okay, so this is what the then only, sorry, in between, yes, they are not writing their names, so I am not allowing them to enter. Okay, it's fine. So we have two different properties, one that is the physical properties and one that is the chemical properties. Okay, so based on the physical and chemical properties, you can measure it something. Okay, so in chemical properties, what we will measure, chemical property में क्या measure करेंगे, तो उसका chemical composition, वो किस चीज का बना हुआ है. Okay, that if you wanted to measure it, okay, then we wanted to measure the chemical properties. But then today's our topic, which is the major important part of us, okay, that is the physical properties. Okay, suppose I am having the spec. Okay, then what is the weight of this, what is the mass of this object, of the spectacles. Okay, that is considered to be the physical properties. Okay, so let us move further now. Yes, the first of all, the SI units. If you wanted to measure the physical properties, then there is a requirement of specific system, okay, which is called as an SI, that is system international units, that is international system of units. Okay, now why there is a requirement of this SI system, that you should have first. Okay, previously maybe you have heard the story somewhere, in Gujarat it was coming that Murak no Sardar. Okay, there was one person who wanted to make a furniture, the cupboard. Okay, he has measured his cupboard like this, okay, by his hands. Okay, and then he was used to walk on the way. Suddenly in between, the dig has came, खड्डा आ गया बीच में, तो वो उसमें गिर गया. Okay, and then one person has taken out. Okay, and then once again he used to say that the measurements, okay, of the cupboard, of the furniture, it was like this. Okay, so previously they used to measure the distance, okay, by this way also. Even maybe you have heard somewhere, if you go to the shop of cloth. Okay, previously they used to measure the 1 meter, then it is like this, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Okay, it was like this. But then nowadays there is a measure tape. Okay, they used to measure it by using the measure tape, not by their hands. Okay, so even somewhere they used to measure it with the hand span. Okay, wet in Gujarati we used to call, so this is called as an hand span. Okay, through that also they were measuring. Okay, but then the person, if it is different, then the hand span will vary. Okay, समझ में आ रहा है.
कि मैं अगर मेजर कर रहा हूं, आप लोग मेजर कर रहे हो, कोई और बंदा मेजर कर रहा है, ओके, देन इट वुड बी द डिफरेंट। ओके, तो वहां पे एस्पेक्ट अलग अलग आ जाएगा, तो डिस्टेंस में पेरिटी नहीं आएगी, इट इज गोइंग टू बी वेराई, इट इज गोइंग टू बी चेंज। ओके, तो उसकी वजह से ऐसा सिस्टम की जरूरत पड़ गई। ठीक है, सो नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन इन यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टोटली थ्रू आउट द वर्ल्ड सब लोग अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करते थे। जैसे कि मास को मेजर करना हो, दे वर यूजिंग द किलोग्राम, इवन few part of the country they were using the pound also। okay, miles, forlogans, yard to measure the distance। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो 72 यार्ड का जो ग्राउंड रहता है, ओके, ऑन एन एवरेज। so even few parts they used the yard also to measure the distance, furlongs, even miles, meter, kilometer, okay, they used to measure it। so the problem was the people of throughout the world, they were facing a problem that few of the part of the country they were measuring the units in different physical quantity, they were measuring in different units। okay, so there should be some common system throughout the world, okay, so that the parity will maintain। okay, so to have a common system of the units throughout the world, French Academy of Science in 1791 introduced a new system of measurement which is called as a metric system, in which the different units of the physical quantity are related to each other। they were the multiples of the powers of 10, 10 के पावर में metric system में लेते थे। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, so 1 kilometer you can write it that is 10 raised to power 3 meter, 10 raised to power 3 meter, मतलब कि 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है 1000 मीटर। so this 1000 meter you can write it up to 10 raised to power 3 meter। okay, then 1 centimeter we can also write that is 10 raised to minus 2 meter। okay, so this was very easy, the metric system, and this system of units was found to be the convenient for the scientist। okay, all over the world adopted this system for the scientific data। so wherever if anybody is doing any research sort of thing, okay, so at that time they were using this metric system, okay, which has been given by the French Academy of Science in 1791। okay, now there are 7 basic units for this SI system, the system international। might be you people have studied in the physics also, आप लोग बच्चों फिजिक्स में भी ये पढ़े होंगे। okay, same thing we are going to discuss। okay, the 7 basic physical quantities in the international system of units, it was their symbols, the names with their units, okay, which is called as a base unit, and the symbol of these units are given in form of tabulated form। टेबल के फॉर्म में ये पूरा हमें दिया गया है। sorry, so let us see one by one in the table what it has been given, that is 7 basic physical quantities and their SI units। same table it is available in the physics subject also, in the chapter number 1 itself, okay, which is very much important my dear students। okay, till today there are so many students of the 12th standard, they used to suffer with this calculation, okay, when it comes to the calculation part, okay, and even with the basic unit only, okay, these are the 7 basic or the physical quantity, okay, throughout the world। suppose if you measure the length, then you need to measure it in meter only। अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, यूएसए में हो या फिर यूके में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो, ओके, तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंगली, साइंटिफिकली डेटा के अकॉर्डिंगली आपको मीटर उसका सिंबल, उसका यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। okay, this is what the system international unit। so throughout the world if somebody is measuring the length of anything, okay, then they have to give it in the meter। okay, so let us see this all complete table with a detail। the first one you can see over here, the length। सबसे पहला हमारे पास है लेंथ। okay, so length
The name of the physical quantity is the length, and the symbol of it is smaller l. सेकेंड एबीसीडी में एल जो हम ड्रॉ करते हैं लिखते हैं उसके जैसा। एसआई यूनिट उसका क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड द सिंबल फॉर एसआई यूनिट इट इज स्मॉल एम। स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं करना है बच्चों, स्मॉलर एम। सो द फर्स्ट वन इट वाज द लेंथ, ओके। देन द सेकंड नेम, second physical quantity, it is the mass, okay, mass. The symbol of mass is small m, okay, small m. Then SI unit, SI unit, okay, for the same, the SI unit of mass is the kilogram, okay, is in kilogram, and the symbol of this SI unit is in kg, okay, kg. So the first one was the length, the second it is the mass. Now the third one, that is time, okay. Third physical quantity is the time, okay. The third one, this one, that is time, okay. The symbol of physical quantity is the smaller t, okay. The SI unit is the second, okay. Throughout the world time can be measured in second, okay. Then the symbol of it is s, okay, small s, okay, to measure the time. The unit is second and the symbol is small s, okay. Then the fourth physical quantity, चौथी physical quantity है electric current, okay, electric current. And the electric current, okay, the symbol for it is capital I, okay, capital I, and the SI unit of it is the ampere, okay, and the symbol of ampere is capital A, okay. After that we have the temperature, that is the symbol of temperature is the capital T, okay. The SI unit is in Kelvin and the symbol for Kelvin is capital K, okay. Then the sixth physical quantity, that is luminous intensity. Luminous intensity ये ज्यादातर पूछते हैं एमसीक्यू में, 1 मार्क क्वेश्चन में. The symbol is IU. I is capital, U is small in subscript. Subscript मतलब नीचे लिखते हैं, okay, IU. And the SI unit is candela. ये बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों. Luminous intensity, the what is the SI unit? That is the candela, okay, and the symbol is CD, okay. Symbol is the candela for that, CD, okay. After that, the amount of the substance in a physical quantity, the seventh basic physical quantity, the amount of a substance, okay. The symbol is small n, nagarano no, small n, okay. And the SI unit to measure the amount of a substance is a mole, okay, MOLE, and the symbol for mole is MOL itself in a smaller letter, MOL, okay. So this was the 7 basic units, okay, which has been you can say prepared to maintain, okay, the units throughout the world. आप कोई भी research कर रहे हो तो पूरे world में आपको यही 7 basic units पाए जाएंगे, ठीक है. Then the SI system recommends the multiples such as 10 raised to power 3, 10 raised to power 6, 10 raised to power 9. ये 10 के बाजू में 3 लिखा हुआ है, that is the power 10 raised to power 3, then 10 6 लिखा हुआ है 6, 10 raised to power 6, and then 10 raised to power 9, okay, etc. And the fractions such as 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 9, etc. तो आपको मल्टीपल्स में पॉजिटिव पावर है और नेगेटिव पावर है, ठीक है, and that is the power of the multiples of 3. Now some commonly used prefixes with the base units, it has been given over here, okay. Same to same table आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, okay, in NCERT, okay. So prefix, suppose the first one it is deci, the symbol is small d, the multiplication factor is 10 raised to minus 1. An example they have given, that is 1 decimeter is equal to 10 raised to minus 1 meter. So everything, see in example, everything in aspect of meter they have given to us, okay.
Then the second one is the centi. Symbol is C. Okay, smaller c, 10 raised to minus 2 is a factor of it. 1 centimeter is equal to 10 raised to minus 2 meter. ये बच्चों याद रखना है, घुसा देना है माइंड के अंदर. Okay, because it is very much important to convert, for the conversion from one place to the other place, meter to centimeter, meter to kilometer, whatever the there. This is just for the distance they have given. Okay, then milli, 10 raised to minus 3. Okay, 1 millimeter is equal to 10 raised to minus 3 meter. Then micro is a small u, like that. Okay, mu, it is called in Greek alphabets, mu, myu. Okay, the symbol of micro is 10 raised to minus 6. 1 micrometer, 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 6 meter. Okay, then the nano, small n, 10 raised to minus 9 is the multiplication factor. 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 मीटर. ये एमसीक्यू 1 मार्क में पूछते हैं. ठीक है, सम्स में भी आएगा, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन पिको, small p, 10 raised to minus 12, the factor is 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. Okay, after that we have femto, small f. Okay, then 10 raised to minus 15. Okay, 1 femtometer is equal to 10 raised to minus 15 meter. Okay, उसके बाद एटो, ए डबल टी ओ, द लेटर सिंबल इज स्मॉलर ए. ओके, 10 raised to minus 18. 18 से एटो याद रख सकते हो आप. ओके, 1 एटोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to minus 18 मीटर. ओके, उसके बाद है हमारे पास एटो के बाद डेका. ओके, दैट इज डी ए, 10 raised to power 1 but in a positive manner. डेसी इट वाज -1, 10 raised to -1. डेका जो है दैट इज 10 raised to +1. okay, so 1 decameter is equal to 10 raised to 1 meter. Okay, then hecto, small h, 10 raised to power 2. Okay, 1 hectometer is equal to 10 raised to power 2 meter. Okay, then kilo, kilo, so kilo के लिए k, 10 raised to power 3. Okay, then 1 kilometer is equal to 10 raised to power 3 meter. Okay, then mega, capital M, 10 raised to power 6. 1 mega meter is equal to 10 raised to power 6 positive. Okay, meter. Then giga, capital G, 10 raised to 9 gigabyte. Okay, वो आपको पता होगा. 1 gigabyte, 1 gigameter, not gigabyte, gigameter. Gigabyte is a smaller unit to measure the memory. Okay, for the computer. So 1 gigameter is equal to 10 raised to 9 meter. Okay, then tera. Okay, tera, that is capital T, 10 raised to power 12. Okay, 1 terameter is equal to 10 raised to 12 meter. Okay, then peta, capital P. Okay, peta, 10 raised to power 15. peta for 15 याद रख लेना है. Okay, and then 1 petameter is equal to 10 raised to plus 15 meter. Okay, then exa. Okay, capital E, 10 raised to plus में 18 power. Okay, 1 hexameter is equal to 10 raised to 18 meter. Okay, so this is what the very much important table. Okay, पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है. ओके, -18 से लेके +18 तक जाना है और आपको याद रखना है बच्चों. रिमेंबर दिस टेबल. ओके, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट. ओके, चलो नेक्स्ट. यस, नाउ there are few physical quantity, one by one we are going to discuss it. Okay, the first one we are having the volume. Okay, the volume, a volume is very often you express in a liters. Generally the volume is used to express in liters. वो लीटर में मेजर करते हैं. ठीक है, 1 लीटर दूध दो भाई. ठीक है, 1 लीटर छाछ दो. ठीक है, ऐसे करके हम बोलते हैं. 1 लीटर ऑयल दो. ठीक है, ऐसे कुछ भी जो है. ठीक है, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लीटर यूनिट यूज इस्तेमाल होता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इक्विवेलेंस इन एसआई यूनिट्स फॉर द वॉल्यूम इज एज अंडर. एसआई यूनिट्स में क्या है भाई, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब यू कैन राइट. ओके, 1 लीटर, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब is equal to 1000 centimeter cube. Okay, so 1000 centimeter cube के बदले आप 1 decimeter cube भी लिख सकते हो, 1 liter भी लिख सकते हो. ठीक है,
and 1 milliliter means 1 ml is equal to 1 centimeter cube, okay, or is equal to 1 cc. Cc is cubic centimeter, okay, cubic centimeter, okay. So this is what for the volume, okay, which is not the basic, okay. This physical quantity, the volume is not the basic, वो 7 में नहीं आता है, okay. It is derived physical quantity, ये derived physical quantity, ठीक है. The volume, that is length into breadth into height, okay. Volume is. Then next one, the some important unit conversions. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट के कन्वर्जन है, एक एक करके हम देखते हैं. सबसे पहला द फर्स्ट वन हमारे पास है लेंथ, ओके. तो लेंथ के लिए याद रखना है बच्चों आपको कुछ कन्वर्जन, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है बच्चों, ठीक है. आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके. चैप्टर जब खत्म होगा तब हम जीनेट के सेशन चालू करेंगे, आपको मैंने बोला हुआ है, ओके. व्हेन द चैप्टर इज फिनिश्ड तो जीनेट सेशन आएगा, उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ऑल दिस इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो अभी से आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट इवन दो दे यूज्ड टू आस्क इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, एमसीक्यू में पूछते हैं ये सब कन्वर्जन्स, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ओके. सो लेंथ 1 माइल, उसके लिए 1760 यार्ड्स, ओके, 1760 यार्ड. तो 1 यार्ड के लिए 3 फीट बोल सकते हैं, 1 यार्ड के लिए 3 फीट, ओके. 1 फुट के लिए 12 इंचेस, ओके, 1 फुट 12 इंच. 1 इंच के लिए 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर. 1 एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर बोल सकते हो. मीटर में बोले तो 10⁻⁻10, सेंटीमीटर में बोले तो 10⁻⁻8, okay. Then the next one, that is mass, okay. So 1 ton is equal to 1000 kilogram, 1 quintal is equal to 100 kilogram, okay. Then 1 kg is equal to 2.205 pounds, okay. 1 kg is equal to 1000 gram also you can write. Then 1 gram is equal to 100 milligram mg, okay. मैग्नीशियम वाला mg नहीं है भाई, मिलीग्राम का mg, okay. Then 1 AMU is equal to 1.67 into 10⁻24 gram, okay. So all this data you need to use it, you have to remember it, okay. Throughout 11th and 12th, पूरे 11th 12th में ये काम में आएगा, फिजिक्स में भी काम में आएगा, केमिस्ट्री में भी काम में आएगा, कहीं कहीं पे बायो में भी काम में आ सकता है, ओके. देन कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स के लिए नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो, या फिर 10⁻³ ml बोल सकते हो, या फिर 10⁻³ cc मींस क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हो लीटर के लिए, ठीक है. तो पूरे के लिए 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बदले 1 डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हो, 1 डेसीमीटर क्यूब के बदले 10⁻³ cc मींस क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई भी चलेगा इसमें, एक दूसरे के बदले आप कन्वर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट 1 ml के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब यू कैन राइट, और एल्स 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और एल्स 1 cc दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर आल्सो यू कैन राइट, ओके. फिर है हमारे पास एनर्जी. अभी ज्यादातर एनर्जी बहुत कम मेजर करने की आएगी, पर तो भी हम बात तो कर लेते हैं, क्योंकि 12th में आ सकता है, 11th में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है. तो वहां पे भी हम एनर्जी का कैलकुलेशन करने वाले हैं. सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स बोल सकते हो. तो जूल 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स. अर्ग इज अ यूनिट ऑफ टू मेजर द एनर्जी, ओके. सो जूल में से अर्ग में जाना हो, अर्ग में से जूल में जाना हो, तो दिस कन्वर्जन इज गोइंग टू हेल्प यू. 1 liter atmosphere is equal to 101.3 joule. Then 1 electron volt EV is equal to 1.602 into 10⁻⁻19 joule, ओके. तो ये बात हुई भाई हमारी एनर्जी के लिए दोस्तों, ठीक है. एनर्जी के बाद नेक्स्ट
फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास प्रेशर, ठीक है, जो एग्जाम आने के वक्त हर कोई के ऊपर होता है। आप सब तो नसीब वाले हो, बिना एग्जाम के सब लोग पास हो गए, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे हो कि अगर एग्जाम होती तो अच्छा होता, अगर उनकी प्रिपरेशन बढ़िया सी होगी तो, ठीक है। जो बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की होगी, ऐसे बच्चे ऐसा सोच रहे होगे वाह बिना एग्जाम के पास, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द पीपल, ओके, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट मेंटालिटी, ओके। अभी उसमें आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो आपको पता होगा भाई, ओके। सो द प्रेशर 1 atm एटमोस्फियर, ठीक है, 760 टोर, 760 टोर, then 760 mm of Hg also you can write. Hg is, that is stands for mercury, okay. Then 76, that is 76 centimeter of Hg also you can write, centimeter, mm में पूछे तो 760 लगाना है, सेंटीमीटर में पूछे तो 76 लगाओगे तो भी चलेगा, ओके। इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, अगर पास्कल में पूछे तो, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, पास्कल के बदले सेम टू सेम, जितना पास्कल है उतना ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगा देना है, ओके। सो दिस इज व्हाट द प्रेशर एंड द डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर द प्रेशर, ओके। ओके, देन वन मोर विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन में काम में आने वाला है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास केल्विन का फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री ऑन सेल्सियस, ठीक है। केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री ऑन सेल्सियस, वेर एज सेल्सियस को सब्जेक्ट को सेल्सियस टू फ़ारेनहीट का कन्वर्जन हो, ये तो कन्वर्जन था वो सेल्सियस टू केल्विन का था, ठीक है, और केल्विन टू सेल्सियस का। और सपोज कोई आपको ऐसा पूछे भाई कि फ़ारेनहीट के लिए तो टेम्परेचर का और एक यूनिट है विच इज कॉल्ड एज अ फ़ारेनहीट, तो फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला, तो उसके लिए हमारे पास डिग्री ऑन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f माइनस 32, ओके। ये फॉर्मूला से आप सेल्सियस टू फ़ारेनहीट या फिर फ़ारेनहीट टू सेल्सियस कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सम मोर प्रीफिक्सेस, ये आप लोगों में से कुछ बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। उसकी बात करेंगे, सेमी के लिए 1/2, सेस्क्वी के लिए 3/2 दैट इज 1.5 डेड, ठीक है। कभी कोई बंदा कुछ ज्यादा काम करे तो डॉट डाया हम बोलते हैं, तो उसके लिए सेस्क्वी इज यूज्ड दैट इज 1.5, 3/2। ट्राई के लिए 3, ओके। देन टेट्रा के लिए 4, मोनो के लिए देखो 1, सबसे पहले सेमी आधा, मोनो के लिए 1, ओके। सेस्क्वी के लिए डेड 1.5, ओके। देन डाई और बाई के लिए 2, ट्राई के लिए 3, ओके, टेट्रा के लिए 4, पेंटा के लिए 5, ओके, हेक्सा के लिए 6, हेप्टा के लिए 7, ओके, ऑक्टा के लिए 8, नोना के लिए 9 और डेका के लिए 10। यहाँ तक तो पता होगा, ओके। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका, ठीक है, टिल 10। यहाँ तक तो ज्यादातर शायद बच्चों आप लोगों को पता होगा, ठीक है, पर इसके बाद शायद पता हो ना भी पता हो, ठीक है। 11 के लिए अंडे का, आप 10th में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो सब पढ़े होंगे, ठीक है। सो 1 कार्बन के लिए मीथेन, हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन, 10 तक शायद आपको पता होगा, उसके बाद में नहीं पता होगा भाई। तो 11 नंबर है अनडेकेन, यानी अंडे का आता है, ठीक है। 12 नंबर के लिए डाइडेकेन मतलब 2 डेका, ओके। 13 के लिए ट्राइडेका, 14 के लिए टेट्राडेका, ओके। 15 के लिए पेंटाडेका, 16 के लिए हेक्साडेका, 17 के लिए हेप्टाडेका, 18 के लिए ऑक्टाडेका,
19 के लिए नोना डेका, दैट इज 19, and 20 के लिए इकोजो और आइकोजो, you can use it. Okay, so these are the some more prefixes, okay, which can be used. That's all for today. Okay, in this if you have any doubts you can ask me. Okay, मैंने कल भी बोला था मेरी एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, और यूट्यूब के अंदर भी चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। रेगुलरली उसके अंदर मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ हर एक स्टैंडर्ड दोनों मीडियम के लिए, गुजराती एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।